तो आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लगातार न्यूज स्टेट की एक खास पेशकश जारी है। आपको हर तस्वीर हर जगह से हम एक एक अपडेट दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आइए आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं और मैसूर में जो योग चल रहा है वहां से सीधी आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वक्रासन। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखी, बलगालन मड़चुत्ता बलपादवन्न एड मोळकालिन पक्कदल्लि अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए, एडगैयन्न बलपादद पक्कदल्लि श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए। ट्विस्ट युवर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ वक्रासन अर्ध मत्स्येंद्रासन मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत सहायक है। अब श्वास भरे वापस आइए, उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अब इस आसन को बाई तरफ से भी करेंगे। ಈ ಆಸನವನ್ನು ಎಡಭಾಗದಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಡೋಣ। बाएं पैर को मोड़िए, पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए, निदानವಾಗಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡಪಾದದ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। अपने दाहिने हाथ को बाएं पंजे के पास रखिए, ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और कमर को बाई तरफ मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। प्लीज ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ट्विस्ट इट और थोड़ा। अब श्वास भरते हुए दंडासन में वापस आइए, उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ यथास्थितिಗೆ बन्नी, विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सिर को मंच की ओर रखते हुए पेट के बल लेट जाइए। ತಲೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಉದರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು। प्लीज पुट योर हेड टुवर्ड्स द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। मकरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿರಲಿ। दोनों कोहिनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಡಿ। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। ತಲೆಯನ್ನು ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। ಮಕರಾಸನ ಮೈಮನಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಆಸನ। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास भरे। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। स्ट्रेच योर आर्म्स। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए, हथेलियों को सीने के पास रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। ನಿಮ್ಮ श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ आसनवನ್ನ कायदुಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास छोड़ते हुए छाती और माथे को जमीन पर रखिए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ यथास्थितिಗೆ बन्नी, मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शलभासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ ಶಲಭಾಸನ। अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ। अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। ठोड़ी को जमीन से लगाइए, गद्दವನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ। पैरों को सीधा रखिए, पैरों को सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। हाथों को आगे लाकर मकरासन में विश्राम कीजिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। अब बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए
ಪೀಠ್ के बल लेट जाइए ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದ ಕೆ ಹೊರಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ सेतु बंधासन जिन्हें गर्दन में दर्द हो इस आसन को सावधानी के साथ करें दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियम को नितंब के नजदीक लाइए ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಡಿ अपने ढकनों को पकड़ लीजिए पादದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ शवासन में विश्राम कीजिए अगला अभ्यास उत्थान पादासन ಮುಂದಿನ ಆಸನ उत्थान पादासन पैरों को मिलाइए ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ हाथों को शरीर के बगल में रखिए ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए 45 डिग्री का कोण बनाए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಭಾಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು सहजवाद उसिरास श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए शवासन में विश्राम कीजिए ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ अगला अभ्यास अर्ध हलासन दोनों पैरों को मिलाइए हाथों को जंघाओं के पास रखिए ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ श्वास भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाई ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 90 डिग्री का कोण बनाए नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे ಪುಷ್ಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाई ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए अगला अभ्यास पवन मुक्तासन अपने पैरों को मिलाइए ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़िए